This conference will now be recorded. Touch 7. तो यहाँ पे भी आपकी कुबरनेट सर्विस आती है EKS के नाम से, इलास्टिक कुबरनेट सर्विस। गॉट इट। एंड ऐड अ क्लस्टर। तो सेम ऐसा कि आप यहाँ पे भी अपना क्लस्टर क्रिएट कर सकते हो। क्लस्टर का नेम, गिव द सर्विस नेम लाइक अ सर्विस रोल। सो आई एम ऑलरेडी क्रिएट रोल, सो यहाँ पे रोल नहीं है, आई एम फैच इट। सो कोई रोल नहीं है, सो आई एम जस्ट क्रिएट अ सर्विस रोल। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, जस्ट गिव द ऐड नोड्स कि कितने नोड्स हम ऐड करना चाहते हैं। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर है, वही प्रोसेस आपका क्या है, अजूरे पे है। तो नाम डिप्लॉय इन अजूरे। तो क्लिक ऑन द कुबरनेट सर्विस इफ इट सर्विस नॉट अवेलेबल, क्योंकि आपका AKS काफी ज्यादा डिमांड में है। तो अगर आप अपना AKS क्लस्टर रिज्यूम पे मेंशन कर देंगे तो दैट्स बेटर फॉर यू। और मैं ये कहूंगा जो भी क्लाउड में डेवऑप्स पढ़ रहा है, अगर वो सिर्फ AKS भी कर लेता है, अजूरे क्लाउड और AKS सर्विस पढ़ लेता है, तो सोचो उसका अजूरे डेवऑप्स भी कवर हो जाता है। तो जब कवर डेवऑप्स के अंदर सिर्फ क्लस्टर जो कुबरनेट सर्विसेज है ना वो अलग है, बाकी सब गेट डॉकर वगैरह सारी चीज सेम ही है। तो यहाँ पे देखें तो आपका एक अजूरे, ये एक टॉपिक के साथ ही आपका क्या होगा, अजूरे डेवऑप्स भी कवर्ड हो जाएगा आपका। So now the how to deploy, so I'm just searching KUBER Kubernetes service. And inside the Kubernetes service, I'm just click on a create. And same concept in Azure subscription, I'm select the resource group. The resource group is a collection of resources. Like आप जो भी चीजें बनाएंगे तो आप एक जगह उसको सेव कर सकते हो कि क्या क्या चीजें बनाई है। लुक लाइक अ डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड पे क्या आता है, सारी चीज दिखाते हैं ना, कितने लोड बैलेंसर बनाए हुए हैं, कितनी चीजें क्या है। सेम कॉन्सेप्ट है कि रिसोर्स ग्रुप के अंदर भी इट डिप्लॉय द कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। सो लाइक माई रिसोर्सेज। तो यहाँ पर मैंने एक डिप्लॉय करा माई रिसोर्सेज के नाम से। इफ यू कैन जस्ट डायरेक्ट माई रिसोर्सेज नाउ द प्रेजेंट आई एम जस्ट यूजिंग अ डेवलपमेंट एंड टेस्ट। नाउ the Kubernetes cluster name, I'm just give the ICCP cluster. Now the in which region you deploy, so वहां पे रीजन का ऑप्शन ऊपर आता था, मुंबई या सिंगापुर। नाउ यहाँ पे रीजन का ऑप्शन आता है, जब भी आपको रिसोर्स डिप्लॉय करेंगे तभी आपके पास आएगा where you deploy. So this is a region is available now where you deploy your cluster. Now you select a region. So now I'm just select a central US. Now this is a Kubernetes version is available. Then the hardware, so like the what is the hardware configuration is required, like वहां पे हम क्या select करते थे, T2 medium, 2 CPUs and 4 GB RAM. द सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि यहाँ पे 4 CPU और 16 GB मेमोरी आ रहा है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक एंड दिस इज द साइज। तो VM size, so now I'm using like 2 CPUs and 4 GB RAM B2S। तो यहाँ पे जो इंस्टेंस टाइप है वो क्या है, B2S। द अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट इज 2600 रुपीज ऑन अ मंथ। Clear everyone? So now I'm select the hardware size. Now the number of count node, यानी कि वर्कर नोड्स आपको कितने चाहिए। Got it? तो क्लस्टर के साथ आप कितने वर्कर नोड लगा सकते हैं, तो मैक्सिमम 1000 वर्कर नोड यहाँ पे आप लगा सकते हो, जो कि काफी ज्यादा है। नाउ आई एम जस्ट यूजिंग ओनली द वर्कर नोड 1। मैं एक ही नोड लगाना चाहता हूँ अपने क्लस्टर के साथ। गॉट इट? तो इनसाइड द क्लस्टर वी आर यूजिंग वन वर्कर नोड। द नेक्स्ट नोड पोल, सो नाउ दिस इज अ वन नोड जो मैंने अभी सिलेक्ट करा है, एक ही नोड हमने लगाया, सो दैट्स व्हाई इट शो द वन। अगर आप और भी ऐड करना चाहते हैं, सो यू कैन ऐड अ मल्टी नोड। नाउ द नेक्स्ट नाउ दिस इज अ नेटवर्किंग लाइक अ कनेक्टिविटी। सो वहां पे हम यूज करते थे VPC, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुबरनेट हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं जिसके अंदर हम यूज कर रहे हैं अजूरे सर्विस। तो मैं अजूरे का नेटवर्क यूज करना चाहता हूं, सो इट्स क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क नेम इज माई रिसोर्स VNet। It's use the IP address of network 10.2.0.0.16. It's create a Kubernetes subnet /16.
DNS IP this एंड डॉकर ब्रिज यानी कि जो कुबरनेट के अंदर पॉड्स बनेंगे उनके अंदर डॉकर्स बनेंगे तो उन पे जो आईपी मिलेगा वो 172 के रेंज का मिलेगा. नाउ द नेक्स्ट इंटरगेशन नथिंग नेक्स्ट एंड रिव्यू एंड क्रिएट. So guys, this is a way you can create a EKS cluster. Sorry, AKS. Now the same as I'm just deploy a EKS. मैं Azure भी आपको AWS पे भी deploy करके दिखा देता हूँ. क्या समझा नहीं? मास्टर नहीं है, कंप्यूट लेस है. एवरीथिंग मैनेज बाय द Azure. मैंने आपको बोला ये वेंडर स्पेसिफिक है. बट अगर आपको अपना कस्टमाइज बनाना है कंप्यूट, देखिए दो टाइप्स की सर्विस होती है क्लाउड में, एक कंप्यूट और एक कंप्यूट लेस. कंप्यूट का मतलब है कि आपने एक वर्चुअल सर्वर लिया और उसके ऊपर डिप्लॉय कराया. तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने वर्चुअल सर्वर लिया था और उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट कर रहे थे. गॉट इट? दिस इज अ कंप्यूट लेस. हमने यहाँ पे कोई वर्चुअल सर्वर ही नहीं लिया, डायरेक्ट कुबरनेट डिप्लॉय कर दिया. तो बैकएंड में जो लिनक्स की एक सिंगल नोड लिया है, सारी चीज उसी पे डिप्लॉय हुई है और वो किसके थ्रू मैनेज हो रही है? मशीन अजूरे क्लाउड के थ्रू मैनेज हो रही है. उसका मंथली कॉस्ट क्या आएगा? 200 समथिंग जो शो हो रहा था वो हमारी मंथली कॉस्ट आएगी. गॉट इट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? Sir, yes, Aswak, sir. Pankaj, Rakesh. Now the same, I'm just how to deploy the EKS cluster is simply I'm just go to login with AWS and type the EKS. Now same process is applied in EKS, like full manage the Kubernetes control plan, add and the create, give the name of EKS like my ICCP. Now the version, the IAM role, so there's a no any role. So before this, I'm just create a one role. So I'm just click refresh it. I think so role to bana hua hai, the cluster service role. So now I'm just create a cluster service role. So I'm just first of all I'm just go to the IAM. Got it? Open a new और like कि मैं अपने clusters को क्या राइट देना चाहता हूँ. Got it? So मैं cluster को क्या राइट देना चाहता हूँ. So now I'm just create a roles और roles मैं किसके लिए create कर रहा हूँ guys? EKS के लिए ना, सॉरी EKS के लिए ना. तो AWS सर्विस और नाउ द सर्विस में मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूंगा? EKS. नाउ द EKS के लिए क्या सिलेक्ट कर रहे हैं? क्लस्टर के लिए कर रहे हैं हम. EKS क्लस्टर हम बना रहे हैं ना, तो उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं? रोल्स बना रहे हैं. सो हम सिलेक्ट है EKS क्लस्टर. So now I'm using this EKS cluster. Allow the EKS to manage a cluster on your behalf. Or either a node group, a node connector, node like the allowed access to other AWS service sources that are required to operate cluster managed by EKS. So I'm using this EKS cluster. Now the next Amazon EKS cluster. This is a service, the permission policies or set a permission boundaries, use the permission boundaries to control. So मैं EKS service ही select कर रहा हूँ. Now the role name is like my EKS. And now the create role. So guys, I'm create a one role and now I'm just go to the Amazon EKS. And now the refresh. Now my EKS role is show. Got it? Then next. The VPC. So now you use a default VPC or custom wise. So I'm using a default VPC. These are the subnet in which location you deploy. I'm remove the C. I'm using a subnet. This one and this, like the three subnet. The security group is required. I'm select a Git project. This is my customized security group. Is a default security group or either you use this one. Choice is here. You can select a multiple. The choose a cluster IP address family. I'm using a IPv4. We are using the IP configuration. The configure cover subnet service IP address range. So अगर आप specific range देना चाहते हो, जैसे कि वहां पे किसने EKS में अलग से उसने कुबरनेट के लिए एक रेंज दी थी, तो अगर आप यहाँ पे रेंज देना चाहते हो दे सकते हो, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा. लाइक अ क्लस्टर एंड पॉइंट एक्सेस, यानी कि आप क्लस्टर को किस तरीके से एक्सेस करना चाहते हो, पब्लिकली या विद इन अ क्लाउड. तो अगर मैं पब्लिकली करना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कि पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों एक्सेस हो, विद इन क्लाउड भी और क्लाउड से बाहर भी वो क्या हो, मेरे एक्सेस हो. Now this is a version is available. Now just click on next. Now the API server is required.
ठीक है ना। एंड एपीआई सर्वर आपको चाहिए तो लॉग पेरेंटल कंट्रोल, सो एपीआई सर्वर्स ये हमारी सर्विसेज हैं। कंट्रोल मैनेजर चाहिए, शेड्यूलर चाहिए, तो आई एम जस्ट इनेबल दिस ऑल थिंग्स। ये सारी की सारी चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं हमारे क्लस्टर पे, क्योंकि शेड्यूल के थ्रू ही हम अपनी क्या करेंगे, जॉब शेड्यूल करेंगे। नेक्स्ट, दिस इज अ समरी एंड नाउ द क्रिएट अ क्लस्टर। So my cluster is now begin created. The process make the several minutes. So now guys, this is the way the here is my the cluster is running on. Okay, and now here is this cluster is running on. So now the Microsoft.aks is it? I think so. Go to resource. The deployment is complete, and I go to the resource. And now guys, this is cluster is ready to use. Now how to work? So like कि अगर हमने क्या करा है कि ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैंने एक क्लस्टर बनाया है, लाइक कहाँ पे, लाइक क्लाउड पे। नाउ हाउ टू एक्सेस दिस क्लस्टर। सो अगर आप इसको क्लस्टर को यहाँ से बैठ के मैनेज करना चाहते हो, लाइक कि आप चाहते हो कि आपका ये कंट्रोलर नोड बने, गॉट इट, ये कंट्रोलर नोड बने, यानी कि दिस इज योर ऑन पीसी। तो फर्स्ट यू इंस्टॉल अ CLI। आपको यहाँ पे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, CLI, गॉट इट माय पॉइंट। और क्यूब CTL। तो आपको यहाँ पे लाइक मैं अगर अजूरे का कर रहा हूँ, सो यू कैन इंस्टॉल अजूरे CLI। और अगर आप AWS का कर रहे हैं तो AWS CLI। एज वेल एज आपको यहाँ पर क्यूब CTL भी इंस्टॉल करना पड़ेगा इसी मशीन पे। क्यूब CTL भी क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। So now guys, I'm already go to the C drive, and in this C drive the kubectl is already installed. Now the Azure CLI setup I'm already installed in this machine. Got it everyone? Now कि अगर आप यहाँ पे भी नहीं चाहते, अगर आप उसको अजूरे पर ही मैनेज करना चाहते हो, तो अजूरे का अपना खुद का भी एक पावर सेल होता है। गॉट इट, अजूरे का अपना भी क्या होता है, एक पावर सेल होता है। सो नाउ यू कैन क्रिएट अ पावर सेल। आई एम जस्ट क्लिक एंड टाइप cell.azure.com। तो cell.azure.com गाइस मैंने करा, नाउ इट्स ओपन अ पावर सेल। नाउ कि आप यहां पर से भी मैनेज कर सकते हो। कहता है सब्सक्रिप्शन क्या है, आपको एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर सारी की सारी स्क्रिप्ट्स वगैरह सेव होंगी। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ स्टोरेज अकाउंट, सो ये ऑटोमेटिकली एक स्टोरेज अकाउंट बना देगा। अदरवाइज शो इन एडवांस और एडवांस सेटिंग्स में जाके मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज स्टोरेज अकाउंट भी बना सकता था। सो आप अपना स्टोरेज अकाउंट भी बना सकते हो। स्टोरेज अकाउंट के अंदर यू कैन क्रिएट अ फाइल शेयर ऑल्सो। सो नाउ गाइस जब ये हो जाएगा, यू कैन सी इट्स गिव यू द एक्सेस। सो आप ये अजूरे CLI के थ्रू आप जो मर्जी चीज डिप्लॉय कर सकते हो, आइदर डिप्लॉय वर्चुअल मशीन और एनीथिंग एल्स। सो नाउ द कि मेरा क्लाउड सेल इज एक्टिव। नाउ कि अब आता है कि हम किस तरीके से अपने इसको कनेक्टिविटी कराएंगे। नाउ गाइस द सेम कमांड इज कम टू द कमांड प्रॉम्प्ट। आई एम जस्ट कम टू द CMD इन अ सिस्टम CMD में गया और मैंने यहाँ पे लिखा AZ login। गॉट इट, I am type AZ login and it's asked me the my Azure ID and password. And now you can see that I'm successfully login. And if I'm tag the KUBEQCTL get nodes. So now ये बोल रहा है कि there you are not AKS cluster is not connected। तो मैं login तो हो गया हूं, बट मैंने अपना AKS cluster अभी तक कनेक्टिविटी नहीं करी, क्योंकि जब तक मेरी क्लस्टर के साथ कनेक्टिविटी नहीं होगी मैं क्लस्टर पे काम ही नहीं कर सकता। यस और नो? So how to connect cluster is simply I'm just go to the Azure portal, and this is my cluster. Is the option is click on connect, and now you can just copy this thing. I'm just copy the AZ AKS cluster,
and now come to here and then right click and then now enter. Now that my cluster is connected, now I'm create a command, the kubectl get nodes. So now it shows that it's only one node is available. Got it? हमने एक ही node बनाया था. Now I'm just create a pod like a kubectl run. The same command is using. The cluster बनने के बाद commands वही हैं जो आपने अभी तक Kubernetes के अंदर use करे हैं. Now the kubectl run is like web pod 1, and now the image is equal to ICCP info tec stack. Omega web. Got it, everyone? So now I'm just create a one contain pods. Now I'm create a one more pod like Nginx. So when pod ho gaya, and now if you can see like the kubectl get pods. So now guys, I'm just create a two pods. Clear, everyone? Now if you can go in a graphically, if you can go to the Kubernetes service, if you go to the Kubernetes service, now you can see the node. So now the one node is running. जो अभी nodes मैंने आपको बताया था kubectl get nodes command. So you can see that show the graphically that the one node is available. If you can add a more nodes, so you can add increase the node size. आप node increase कर सकते हो. Secondly, you create a pod. So now I'm just go to the workload, or inside the workload I'm create a two pods. If I'm just click on two pods, it show the these are the default, and now that this WAN pod 1 and this is WAN pod 2. Got it, guys? This is a system generate pods managed by the Kubernetes internally, and now these are the two pods I'm deployed like a pod WAN pod 1 and WAN pod 2. So this is my the pod. The pod is running in ICCP infotech.omega web. This is a pod. Now the pod IP, this is the IP of my the network. जो network हमने define करा था, this is my pod IP. Yeah, if you can access this website, you can create which service. Like guys, there are the two options. If you remember in a last class, I'm give you the service. मैंने आपको Kubernetes service बनाई थी. The Kubernetes service, I'm just created the one service is available is like a cluster IP service. Second service is node port. Now the one more service is available, the load balancer. One more service is available in load balancer. Now the benefit of the load balancer is like if you the one pod is goes down, this automatically distribute the traffic to the another pod. Got it my points? This is a benefit of the load balancer. So now how to attach, how to create a load balancer service, the same command is using is simply I'm just type a command like kubectl. Before this I'm just show you the service kubectl get svc service. So now guys, you can see that stem my the service, only the one service is available with the name of cluster IP. This service is available with the name of cluster IP service. Now if you can create a load balancer service, now the command is simply like a kubelet kubectl, और सेम सर्विस यू कैन अलाउड फॉर द प्रीवियस सिनेरियो जो हमने कल तक करा था पहले, आप सेम ही है क्योंकि कुबरनेट की कमांड्स इक्वल हैं. दैट्स एट दिस टाइम जस्ट डिप्लॉय अ क्लस्टर. सो मैंने इस बार क्लस्टर कहाँ पे आया, मैंने पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंसेस पे क्लस्टर ना डिप्लॉय करके मैंने कहाँ पे कर लिया है, अजूर AKS पे डिप्लॉय कर दिया. सो नाउ कि डिपेंड्स ऑन यू कि आपका कुबरनेट सर्विस में भी है कि कुछ वेंडर्स आपके कंप्यूट लेस सर्विस यूज करें. सो AKS इज ऑन डिमांड. तो मार्केट में AKS डिमांड में है Kubernetes सर्विस, that's why I'm deploy the AKS service also today. Now the kubectl
ctl and the same command expose and expose the pod, and the pod name is like we and when pod pod1. So I'm just create a pair pod1 like the my kubectl expose pod name, and now the hyphen type. So in a hyphen type, you remember that I'm using a service name is node port, but now at this time using a service name is load balancer. Got it? At this time using which service? Load balancer. Now after that hyphen port. Which port is allowed? The 80 port is allowed. Port number 80 used for the web server access. So I'm allowed the port number 80 hyphen name is equal to lbservice service one. So now I'm just create a name, the load balancer service service one, and now enter. So it's give the alpha numerical values is at my lb service. So the kubectl expose pod when pod one hyphen type is equal to load balancer hyphen port is equal to 80 hyphen name is equal to my lb service. And now I'm just क्या बोल रहा है, the expose port when port type load balancer port name is my this service my lb service in value specific type the unsupported value the load balancer support value is cluster ip. Oh, 1 minute guys, I'm just type kubectl give the port name hyphen typ type is equal to okay, so the load balancer का B capital आएगा. Now enter. Got it guys. तो ये चीज ध्यान रखना जब भी आप सर्विस करोगे, अगर आप नोड पोर्ट करते हैं तो N कैपिटल आएगा और पोर्ट का P कैपिटल आएगा. इसी तरीके से लोड बैलेंसर का L लोड का और बैलेंसर का B आएगा आपका. क्लियर? सो नाउ अब अगर आप यहाँ पे सर्विस देखते हो गेट सर्विस, so now you can see that this time the two services available. And what is the IP of load balancer? This is the IP of the load balancer. Now I'm just copy, and what is the port? 33874. Now I'm just go back in a browser and now I'm type Control V, press enter. You can see that your website is open. Now if you can use the Nginx, so now I'm just explain you the one more service is like a kubectl, and now the what is the command is yeah. So at this time using the like node port np service 2. Got it? Now at this time using like WAN port 2 hyphen port. So I'm just mention a port. So if I'm just mention a port, I'm using the WAN port hyphen port is equal to 90. This is my WAN port. I hyphen type. The service type is called name is node port. Node port and hyphen target hyphen target hyphen port is equal to 80, and I'm just create another service. So it's also give me the error, so I'm just check
Node. So now guys, I'm just create a one more service. So now the bot service, the difference is a bot service like the one service is a load balancer. So एक सर्विस मेरी क्या प्रोवाइड कर रही है, मुझे लोड बैलेंसर प्रोवाइड करा रही है, और एक सर्विस मुझे लोड बैलेंसर प्रोवाइड नहीं करा रही है. So now the load balancer जिसके अंदर नहीं आ रहा वो मेरे लिए चैलेंज है. गॉट इट, वो मेरे लिए क्या है, चैलेंज है, क्योंकि मैं अगर पोर्ट्स कोई भी बना रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि मेरे जो है लोड शेयरिंग भी हो, मेरा लोड इक्वली क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे. सो नाउ यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, मेरा लोड बैलेंसर भी यहाँ पे क्रिएट कर देगा. इफ आई एम जस्ट गो टू द दिस थ्री डॉट्स एंड क्लिक ऑन द लोड बैलेंसर, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली एक लोड बैलेंसर भी, कुबरनेट लोड बैलेंसर भी क्रिएट कर देगा मेरा. इनसाइड द लोड बैलेंसर ये आपका बैकएंड पूल्स, तो बैकएंड पूल्स के अंदर आपके नोड्स आ रहे हैं. तो ये आपके यहाँ पे उसने कुबरनेट सर्वर्स यानी कि आपका जो वो है पॉड है, वो पॉड. और इधर यू कैन सी कि अगर आप यहाँ पे डिस्क्राइब कमांड चलाएंगे, सो लाइक KUBECubectlDESCRIBE describe like if you describe the anything as like you can just load balance services, or either you use a pod service. So like I'm using WEN when POD pod 1. Let's show the complete detail of this pod like wait, KUBECTLDESCRIB describe key spelling when pod 1 what happened, एक मिनट, kubectl get po and when pod 1 नाम तो सही दे रहे हैं, तो kubectl get describe और ऐसे पहले मैं देख लेता हूँ सर्विस and this service name. So I'm just created two services. One is load balancer service, the my lb service service, my lb service service, खाली my lb सर्विस ही है ना. नाउ गाइस देखिए, ये जो हमने सर्विस अभी बनाई थी, तो इस नाम से सर्विस बनाई थी. इन दिस सर्विस दिस इज अ लेबल, यू नो द वेरिएबल, द लेबल क्या होता है, द टाइप्स ऑफ सर्विस इज कॉल्ड अ लोड बैलेंसर. इन क्लस्टर आईपी दिस इज अ क्लस्टर. नाउ द लोड बैलेंसर आईपी दिस इज योर लोड बैलेंसर आईपी. द पोर्ट इज अ पोर्ट नंबर 80 is allowed. The endpoint is 10.240.41:80. This is your वो आपका report. So these are the cluster service. Like if you can see the pods, so like my service की जगह हम just कर देते हैं pod and like WN when POD pod 1. So now it describes the WAN pod 1. So जो अभी हमने WAN pod बनाया था, the name, the priority, labels, and now the running on this particular IPs, the container. If you can just log in with container, so you can type the command like a KUBECUBECTL EXEC execute, kubectl space execute hyphen IT space, give the name of container. The container is look like I'm just using the NGINX. No, no, is it WEN when, or either I'm using WEN when POD pod 1 and BASH bash. So now I'm just logging with container and tap the ls command and I type the cd htdocs. And now see the in that ls command, you can see the my website page is available. If I'm type the cat index.html, now so you can see this is my website is available. जो वेबसाइट अभी मेरी रनिंग है वो वेबसाइट मेरी यहाँ पर वर्किंग है. So you can edit, you can install apt get install vim, or you can edit, or you can move the website as per there. So this is a pod, so they can deploy how to pod and how to deploy a load balancer service. Got it the point everyone? Is it clear guys?
If you can verify Yes, the sir. logs, if you verify the logs, I'm just exit uh, with this pod. और now if you can see the logs मतलब कि क्या क्या काम है logs for la monitoring. तो monitoring के लिए हमारे लिए logs होते हैं. The command is kubectl get logs. kubectl logs. और आप किसके logs देखना चाहते हैं like when pod part1. तो इट्स शो द लॉग्स की जो भी अभी तक हमारा काम हुआ है. तो देखिए यहाँ पे ये आपका वैन पॉड हो गया. नाउ कि मैं अभी यहाँ पे ये पर्टिकुलर आईपी पे पर्टिकुलर इतने टाइम पर ही आपके लॉग्स जनरेट हो रहे हैं. तो आप वन बाय वन यहाँ पे अपने लॉग्स भी देख सकते हैं. और आइदर इफ यू कैन सी द YAML फाइल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉड, so द kubectl pod. अगर आपको अपनी YAML फाइल देखनी है इस पॉड की, द kubectl get pod pod and pod name is when pod pod1 hyphen o for output is YAML. So now it shows that your pod YAML file. The same things is available in graphically. आप graphically भी यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें देख सकते हैं. This all information is available inside the Kubernetes. I'm just click on a home. I'm just go to the Kubernetes service and ICCP clusters. You can create a multiple Kubernetes service. आप यहाँ पे मल्टीपल कुबरनेट सर्विस कर सकते हो बिकॉज दीज आर द कंप्यूट लेस. तो वर्कलोड के अंदर यू कैन इनसाइड द वर्कलोड आप सारी चीजें देख सकते हो कि हाउ मेनी रेप्लिका सेट इज डिप्लॉय. so there is no any replica set is deploy. You can write a YAML file and create a replica set also. ठीक है. so the daemon jobs cron jobs जो आपकी cron jobs रनिंग होती हैं, so अभी हमने कोई भी रन नहीं करी हुई. fine. so the replica set हमने नहीं बनाया. I'm just create a pod. So now it's that why it show the pods. Or either you can just select this pod and click on when pod. So there's a no pod is volumes. The pod का जो storage आ रहा है volume, so अभी हमने कुछ नहीं बनाया, volume share भी नहीं करे हमने. So it's working a full flash. तो volumes वही share करने होते हैं. इस तरीके से containers हैं, containers के अंदर share volumes हमने करा था. One container to another containers. तो वो volume sharing आप कर सकते हो. Within a pod आप कर सकते हो सिर्फ. तो एक pod के साथ दूसरा विद इन pod you can create a multi container, also you can share the volume. Clear guys, this AKS service everyone. So the payable service है guys. So I'm delete के approximately आपको पता है charges कितना लग रहा है. So I'm delete this all services. Now I'm just go back to resource group and I'm delete my resources and now I'm select this resource group. The automatically जो भी resources इस resource group के अंदर होंगे वो सारी की सारी चीजें delete हो जाएंगी. कि हमें क्या होता था उसके अंदर अगर हम बात करते हैं AWS के अंदर, तो हमें हर चीज वहां पे मैनुअली एक एक करके जाके डिलीट करनी पड़ती थी. पर यहाँ पे क्या है कि सारी चीजें एक ही है. आपने चाहे किसी भी रीजन में आप कोई भी चीज डिप्लॉय करो, तो चॉइस इज योर कि आप उसको एक सिंगल रिसोर्स ग्रुप में भी रख सकते हैं. तो अगर आप उस रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने क्लस्टर किस रीजन में बनाया हुआ है, वेब सर्वर कहाँ पे. और अगर आप सारी चीजें डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करिए, ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो भी चीजें वो सब डिलीट हो जाएंगी. तो मुझे वन बाय वन हर जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर एवरीवन? Now I'm back to the AKS service. So now my AKS service is I think so is ready to use. Go back in EKS and now it's creating or again it's active. Okay, now it's come to the active. I'm just click on my EKS service and now you can see the compute. There's a no any compute is available. Got it? कोई भी मेरी EC2 सर्विस इसके अंदर नहीं है. Got it the point? Now I'm just go add node in a group. So जैसे हमने वहां पे node add कराए थे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, node add कराएंगे. Like I'm just track the worker worker node 1. That the node IAM role. So again कि मेरे को node के लिए भी roles बनाना पड़ेगा कि आप क्या rights particular देना चाहते हैं.
तो वो एक्सेस भी आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, बट द सिलेक्ट रोल मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर द सेल्फ मैनेज नोड ग्रुप एज दिस could live as सर्विस इंटरप्शन। तो लाइक का कि क्या क्या चीज मैनेज कर सको आप, तो उन सब के लिए आपको क्या एक रोल भी यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि जो भी आप वर्कर नोड डिफाइन कर रहे हैं आप उनको क्या चीज, क्या राइट्स एक्सेस कराना चाहते हैं। सो लाइक आई एम गो टू create a role and like give the role name is service name is EKS. I'm select the EKS cluster, or inside the I'm just create a node group. Got it? At this time क्या create कर रहे हैं, node group, so I'm just click on node group, then next, select next, and role name हमने नाम ही नहीं दिया कुछ, तो anyways I'm just come to EKS, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे fetch कर लेगा। नाम नहीं दिया कोई रोल को हमने, role AWS service role framework node group is created. Name AKS is created but not it show why. So I'm just back my ICCP cluster, then create add node group, node 1. Oh, why it's not coming? Create a role. Sorry, EKS. Kubernetes service. EKS connector. Yeah, scheduler. Which one? EKS? क्रिएट तो नोड ग्रुप ही करना था, बट EKS कनेक्टर क्यों आएगा? बिहाफ ऑफ EKS ऑलरेडी बना हुआ है, वो नोड फैच करना चाहिए था। EKS क्लस्टर हमने बनाया हुआ है, EKS कनेक्टर। दिस इज अ नेम, ये अपने आप ही नोड का नाम ले रहेगा। इस ये सारे नोड्स बनाने पड़ेंगे वन बाय वन। गाइस ये नोड ना फैच नहीं कर रहा है, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लाइक नेटवर्किंग का पार्ट है, सो यू कैन जस्ट एडिट। जब हमने क्लस्टर बनाया था तो हमारा नेटवर्किंग का पार्ट यहाँ पे आ गया था। नाउ द ऑथेंटिकेशन मेथड है, सो ऑथेंटिकेशन मेथड आपका बेसिकली कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। हिस्ट्री आपको चाहिए, आप हिस्ट्री से यहाँ से देख सकते हैं, और ये डिटेल आपकी पूरी समरी है। दिस इज अ एंड पॉइंट, तो ये हमारा एंड पॉइंट है जिसके थ्रू हम अपने क्लस्टर की कनेक्टिविटी करेंगे। सो EKS क्लस्टर मैंने भी डिप्लॉय नहीं करा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ना अभी पोर्टल चेंज करा है, तो पोर्टल चेंज करा है, तो मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ इसीलिए। बट गाइज इट इज अ वेरी कॉस्टली सर्विस, मैं आपको बता देता हूँ, अजूरे से भी ज्यादा कॉस्टली सर्विस AWS क्लस्टर की है। तो बेटर है कि अगर आप बना रहे हो तो आपका दो ही है कि आप अपना AKS क्लस्टर पे वर्कआउट करिए, और एज वेल एज यू कैन आल्सो वर्कआउट इन जो मैंने ओपन सोर्स बताया उस पर वर्कआउट करिए। और ये भी EKS क्लस्टर भी मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार मुझे देखना पड़ेगा इसका पोर्टल चेंज हुआ है जो, फाइन, तो उसके बाद मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं EKS भी आपको डिप्लॉयमेंट करा दूंगा। गॉट इट एवरीवन? सो गाइस ओके YAML सर। बनाइए और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने पॉड्स को डिप्लॉय करिए। सो बहुत थिंग्स हैं कि इधर यू यूज अ लोड बैलेंसर, रेप्लिका,
लोड बैलेंसर, पॉड्स, सर्विसेज, तो हर चीज का क्या यूज है, हर सर्विस का अपना अपना यूज है। बाकी जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क मिलेगा। तो द आपको कभी भी क्लस्टर क्रिएट नहीं करना है, द क्लस्टर ऑलरेडी आपको क्या मिलेगा, क्रिएट ही मिलेगा। बट ये है कि आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है, कितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करें। सो कुबरनेट्स क्या आप चाहे कहीं पर भी बनाइए, एक सेटअप डिप्लॉय करना अलग है, बाकी सारी कमांड सेम है। आपने देखा होगा जो कमांड पॉड के लिए हम बना रहे थे वही सारी पॉड्स मैंने EKS क्लस्टर पे भी डिप्लॉय करी है, मैंने कोई अलग से कमांड नहीं चलाई है। यस और नो एवरीवन? गाइस इज इट Yes, क्लियर? तो सेम ही yes. कमांड्स आपकी यूज होंगी गाइस, ऐसा मत सोचना कि कुबरनेट की कमांड्स अलग हैं और उसकी कमांड्स अलग हैं। तो नाउ द टुडे आई एम फिनिश a kubernetes service and same as आपका नेक्स्ट वीकेंड वी हैव स्टार्ट जेंकिन और आइदर Ansible। तो जेंकिन या Ansible में से हम कोई एक चीज स्टार्ट करेंगे। सो चॉइस इज योर, आप बताइए जेंकिन करना है या Ansible, दो टूल्स आपके बचे हुए हैं। तो जेंकिन करें या Ansible करें, चॉइस इज योर। एवरीवन बताइए रिप्लाई। अशफाक, पंकज, राकेश, हाँ, yes, sir. बताइए क्या स्टार्ट करना है इन कमिंग वीकेंड। सर इसके बाद